The biggest mistakes by C aspirants. Dosto, let me address this issue straight on point because this is a lecture specifically meant, a session specifically meant for all those students जिनका May 2024 फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है. तो अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप इसे देख सकते हैं या नहीं देख सकते, ये मैं आप पे छोड़ता हूं. पर जिनका ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ या एनी सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट है, आपको ये देखना ही है, आपको ये एंड तक देखना है. बिकॉज ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वॉच दिस एंड अवॉइड दिस मिस्टेक्स विच आई हैव ऑल्सो डन इन माई CA जर्नी, बिकॉज आई हैव ऑल्सो टेकन अ फ्यू अटेम्प्ट्स टू पास. Let me tell you that in my final attempt, I made sure that I avoided all of these things, and which is why I was a better version of myself. There was a new perspective, there was a new enthusiasm, and there was a new Karan who was giving the exam. And which is why, since the approach was different, the result was also different. And this time, I did not see fail in my mark sheet, I see a pass. And that is what I want you to do. Got that? Yes. दोस्तों, ये जो चुनिंदा मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूं, प्लीज अवॉइड कीजिएगा. एंड कंसिडर दिस May 2024 as your last attempt and your final attempt, because this is the only objective I went with in my November 19 attempt. Yes. जहाँ पे मैंने बोल दिया था कि भैया अगर ये नहीं तो मैं, मेरे नसीब में CA बनना नहीं, कुछ और कर लेंगे भाई, कर लेंगे कुछ, और तू भी कुछ और कर लेगा. ये थॉट के साथ ही एग्जाम में जाना, स्टॉप लॉस रख देना, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो समटाइम्स एंड द जर्नी एट द राइट टाइम. तो मन में यही चलना कि भाई ये लास्ट अटेम्प्ट है. एंड जनरली व्हेन वी गो विद दिस थॉट, द काइंड ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म विद which we come up with is very different. Because now you know that this is karo ya maro, do or die, right? And you now want to save this attempt anyhow. So the first thing I would really advise you all to do is make this your last attempt. Go with this thought, go with this energy, that's it. And then automatically, from inside, your instincts will be like, I have to save it. I have to save it anyhow. And the kind of efforts you will start taking, you will always make sure that you go that extra mile. Now, the biggest mistakes, my dear friends, that generally people do is, first, स्पेशली मैं इंटर CA के बच्चों को क्या एड्रेस करना चाहूंगा, that in subjects like accounts and costing, they expected कि उन्हें exemption मिलेगा, but they have landed up getting 30-35. They have actually failed in that subject. Now understand, when you expect that in a subject you are going to get an exemption and you fail terribly, you know what the belief system inside happens like? कि यार अब तो पूरा CA का गेम नसीब का है, मैं इतना अच्छा लिख रही हूं, मैं इतना अच्छा लिख रहा हूं, पर फिर भी क्या है, मुझे 30-35 मार्क आ रहे हैं. व्हाट इज दिस नॉनसेंस? व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट द हेल? देयर इज अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, देयर इज अ सेंस ऑफ एजिटेशन. But trust me, my dear friends, I have been through the same in the same space when in ISKA, a subject which I have taught to different friends of mine, and they passed and I failed. मुझे 15 आया था, 15. और मैं अब समझो कि एक महीने तक, जब तक क्या है, मैंने कॉपीज मंगा ली थी और वो आ नहीं गई थी. आई couldn't start because till the time the copies came and I acknowledged the fact when one of my friend told me कि तू गलत है, you are wrong, I did not start the journey because I did not even accept that defeat. So most of the times that is what happens with students who don't accept the fact that they are wrong. So please, first thing you do is फटाफट से RTI से कॉपी मंगा लो RTI से कॉपी, और देखो where have you made these mistakes. Watch out for yourself. क्योंकि जब तक क्या आप ये एक्सेप्ट नहीं करें ना कि गलती आपकी है,
आप में वो एनर्जी एंथुजियाज्म आएगी ही नहीं, बिकॉज समवेयर यू मस्ट बी फीलिंग दैट अपार्ट फ्रॉम यू देर आर दीज एक्सटर्नल फोर्सेस that are not in your hand and you cannot control your result with your efforts. तुझे ऐसे ही लगेगा कि यार 50 नहीं पूरा 100% गेम लगा है, तो मैं नहीं चाहता कि वो तू सोचे, क्योंकि मैं वो सोच रहा था, पर मैंने जब गलती एक्सेप्ट की कि हाँ मेरे से गलत आंसर्स लिखे गए हैं, और तू भी जब ये रियलाइज करेगा अपनी सर्टिफाइड कॉपी मंगा के, बिकॉज आई होप यू रियलाइज दैट जो एग्जामिनर है उसको कोई पर्सनल वेंडेटा है, दुश्मनी नहीं है तेरे से. तो व्हेन यू सी दैट कि हाँ गलती हुई है, सिली मिस्टेक तो सिली मिस्टेक पर हुई है, गलती हुई है, आई एम रॉन्ग, इंस्टीट्यूट इज राइट, तब जाके तू एफर्ट लेना चालू करेगा, तब जाके तेरा एंथुजियाज्म वापस आएगा, तब जाके विदाउट एनी सेल्फ डाउट तू क्या है आगे चीजों को लेकर जाएगा. तो पहले आरटीआई को कॉम्पीस मंगा, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रॉम विच माइंड set, from which mindset you are starting your preparation again. So it has to be a clean slate and there has to be a belief कि हाँ मैंने गलती की थी, the process was wrong, simple, the process was wrong, so my result was not as per expected, but if the process is right, the result will be as per my expectation. ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, थर्ड, not solving past papers. दोस्तों या तो आपने क्या है पास्ट पेपर सॉल्व नहीं किए होते, या तो फिर क्या है आपने किए भी अगर है तो यू आर डूइंग इट इन द लास्ट 10 to 15 days. अंडरस्टैंड, दिस इज सच अ क्लासिक एरर, बिकॉज जो एग्जाम आप देने जा रहे हो यू डोंट इवन नो द रूल्स ऑफ द गेम. यू डोंट इवन नो कि जनरली कौन से चैप्टर्स में पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, हाउ इज इट आस्क्ड, व्हाट इज आस्क्ड, इन व्हाट पैटर्न इट इज आस्क्ड, कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन है, जनरली लास्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है. अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मुझे वो लिखने को आ रहा है कि नहीं. तो जो भी चैप्टर्स क्या है आपने किए या इस बार आप करने वाले हो, डू वन क्लासिक थिंग, एंड व्हाट इज दैट, वेरी सिंपल. फॉर एग्जाम्पल जीएसटी है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई, सर ने बोला है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रजिस्ट्रेशन है, एग्जेम्पशंस है, सप्लाई, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, यू नो दैट, राइट. देन जस्ट गो, ओके, राइट फ्रॉम May 2018 and search for all the questions related to these chapters. You do a chapter, go to past year questions, do a chapter, go to past year questions. When you do that exercise, what happens is that you realize that your preparation is in alignment with what ICI asks and not something random. Got it? And you start developing a confidence कि हाँ आ रहा है, 5 मार्क आया, 3 मार्क आया, 2 मार्क आया, which is why in my sessions I generally make you solve those questions in the class. Why? So that you start developing a confidence कि हो जाएगा, वो इतना डिफिकल्ट नहीं पूछता है यार ICI, सीनियर ने खामखा डरा के रखा, राइट. सो नाउ यू डू दैट. फोर्थ, keep your hand to the heart. Okay, और आप, you have to be brutally honest to yourself. If you are watching this session, you have to be brutally honest to yourself. Tell me one thing, and I want you all to write in the comment section that I made a mistake, I committed a mistake. I want you all to write this, I made a mistake, right? Tell me one thing, across all those who are going to watch this lecture, you know, in the November 23 attempt, tell me how many of you all omitted the chapter which you had possibly omitted in, let's say, May 23, if that was your second attempt, या फिर आपका जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट था वो आपने क्या प्रोक्रास्टिनेट कर करके फाइनली किया ही नहीं, या इतना कच्चा पक्का किया दैट यू रियलाइज दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम. या फिर यू नो कोई फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तो सम्स है, उसके कोई पर्टिकुलर सम्स है वो आपने नहीं किए. अच्छा, आपने मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं दिए,
आपको प्लान करने थे 3 रिवीजन, आपसे एक रिवीजन भी नहीं हुआ या 2 रिवीजन भी नहीं हुए। कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट and ask yourself that did I commit the same mistake in the November 23 attempt which I also did in May, and maybe in November 22, and maybe in May 22? If you're brutally honest, write it in the comment section, because if you are, I have something to help you with. Because understand, this is a pattern. This is a pattern where you are not ready to get out of your comfort zone. This is a pattern that shows that every time you are failing, the first thing you're doing is doing things that are comfortable to you and comfortable to you. So you are keeping on revising only those subjects or those chapters or those sums which you are good at. Why? Because you want to tell yourself that मुझे आता है, मुझे ये सब्जेक्ट आ रहा है, I can do it, I can do it. But actually में the real stuff is not happening. You are not taking those difficult calls. You are not pushing yourself. You are not getting out of your comfort zone. Why? Just because you failed and you want to tell yourself that you are good enough? This is the biggest mistake that a CA student does. This time, the first thing that you do is every day, just 2 to 3 hours, every day in the morning, you take that subject, you take that sum, you take that chapter, and you do that. Because I did that when I failed in ISCA for 15 marks. I did that. 2 घंटा हर रोज पढ़ता था, थोड़ा पढ़ता था, थोड़ा लिखता था, थोड़ा पढ़ता था, थोड़ा लिखता था, because I always knew that my writing speed is very slow. And with this, I can hardly finish 70-75 marks ka paper accurately. So I wanted to push it to 90-95, which is why I kept writing, I kept making my notes. Do that. Eat the frog in the morning. Next, 5th point. Self-doubt. Now what happens is, just because आपका ये दूसरा attempt है या तीसरा attempt है या चौथा attempt है, whatever the case may be, the belief system that gets ingrained in your mindset is that यार क्या गारंटी है कि इस बार पास हो जाऊं, क्या गारंटी है कि इस बार पास हो जाऊंगी, बिकॉज लास्ट टाइम तो बहुत मेहनत की थी यार, तो इस टाइम ऐसा क्या हो जाएगा जिससे क्या है, चीजें अलग होगी, चीजें डिफरेंट होगी. You stop valuing yourself. You stop valuing your effort. You start doubting yourself, your courage. Whereas the fact is, in life, you have never failed, neither in your school, nor in your 10th standard, nor 12th standard, and maybe not even in CA foundation. Depends. तो यार, just because कोई एक एग्जाम में तो फेल होगा, you are trying to rub off every achievement that you have done up till now. As I said, this, I don't know, but if you want to watch, then watch this Coffee with Karan का शो. उसमें अजय देवगन और क्या है अपना ये रोहित शेट्टी का एपिसोड देखना. वहां पे दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द स्ट्रगल दैट ही एंड हिज फादर एंड एवरीवन हैड टू डू. खाने पीने के वांदे थे यार उनके. तो वहां पे बहुत एक इंटरेस्टिंग वाकया शेयर करता है रोहित शेट्टी. आफ्टर सर्कस दिस मूवी फेल्ड, विच वाज कंप्लीटली फिल्ड विथ प्रॉपर एकदम स्टार कास्ट के साथ बनाया था उसने वो, पर वो फेल हुआ था. तो अनुपम खेर उसके ऑफिस आया था, उसने बोला था कि यार you know what, Rohit, sometimes in life, after few successes, it's not you who fails, it's the event fails, it's that process fails. So you have also had a lot of successes in your life, so you have not failed, it's that process is what has failed. जो तू जिस तरह से काम करते आ रहा है ना, वो गलत है. एंड तुझे अगर लग रहा है ना कि वो गलती सुधारनी है, या ऐसे चार्ज्ड अप या एंथुजियास्टिक लोगों के साथ क्या है प्रिपरेशन करनी है इस बार, जहाँ पे तेरा कोई मेंटर हो, तो आ जा मेरे साथ इस जर्नी में, जहाँ पे मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ GST.
where I will complete GST in 50 to 60 hours, along with Q&A, with 100% coverage. And more so, forget about that. Even if there are selective chapters in GST that you want to do, like the new chapters, the new amendments, and few chapters here and there like exemptions or registration, I invite you to still come. You know why? Because I am going to conduct weekly meetings with my community of students, जहाँ पे हर एक वीक टारगेट दिया जाएगा, फिर वो स्क्रीन टाइम का हो, फिर वो सब्जेक्ट का हो, और एक ऐसी एक्टिविटी दी जाएगी जो उनको करनी है और जो उनको रिपोर्ट करनी है मुझे बाय द एंड ऑफ द वीक, एंड वी विल पिक अप 4 to 5 स्टूडेंट्स, जहां पे हम वो एक कॉमन प्रॉब्लम ढूंढ के लेके आएंगे कि ये हफ्ते क्या गलती हुई, फिर अगले हफ्ते क्या गलती हुई, फिर उसके अगले हफ्ते क्या गलती हुई, और इस तरह से ऐसे सुधरना है दोस्तों कि जब आएगा अपना अप्रैल या मई, जब भी आपकी एग्जाम हो, तोड़ फोड़ कर देंगे एक नंबर. Because understand that every week you are improving so much, and there is someone who's looking out for you, who's with you in this journey till the last day of the exam, where that person wants to motivate you. And the reason I would value you, because yes, you are with me and you have valued my time by whatever nominal fee I have asked. And I would want to value you because you have realized that it's important to now scale up in life. Get a different approach. So yeah, next, the 6th point, my dear friends. Every time when you start to study, don't just start. Don't. Revise yesterday का जो भी आपने काम किया था, तो whatever you did yesterday, revise it today. Because if you revise anything within 24 hours and then 1 week and then 1 month, understand the probability of that retention is more than 3 months. That's a classic revision strategy, my dear friends. Now, this might sound a little cliche, but trust me, my dear friends, in the morning when I used to get up and take that 15-minute run, that's it. That's the only time I gave. या तो मैं स्विमिंग करने जाता, या तो मैं साइकिलिंग करने जाता, या तो मैं सिर्फ भागता 10 से 15 मिनट बस भागता. 15 मिनट भी अगर आप भागोगे ना, 15 minutes also, if you, my dear friends, just run, the adrenal rush that will come, आपका दिमाग खुल जाएगा, endorphins hit करेंगे आपके दिमाग में, and you will feel like conquering the world, man. And you know what, when you challenge yourself in the morning, कि यार लास्ट टाइम है ना, मैं लेट्स से क्या है 1 किलोमीटर भागा था लेट्स से 10 मिनट में, तो इस बार मुझे 9.5 मिनट करना, फिर 9 मिनट करना है, फिर 8.5, 8. Understand, every second that you reduce is a win, because it's not very easy to reduce even a second. And when you show that improvement in your body, in your energy, that replicates in the entire day. So this might look like a joke, but trust me, this makes wonders. And which is why even with such a hectic schedule today, where I have to handle so many things single-handedly, being a solopreneur, मार्केटिंग है, टेक्निकल है, बच्चों की क्वेरीज है, वेबसाइट के साथ है, वीडियोस बनाने हैं, कंटेंट बनाना है, समरी चार्ट बनाना है, 1 concept 1 question बनाना है, Q&A बनाना है, लेक्चर्स लेना है, I find time to go to the gym and hit the gym every morning. बिकॉज वहां पे क्या मैं चैलेंज कर लेता हूँ अपने आप को, तो फिर लगता है पूरे दिन में कोई भी चैलेंज है, I'll box it out. Next, the worst part about student is that उसने क्या ना, ये जो प्रोवर्ब है, ये प्रोवर्ब है या ये फ्रेज है, जो भी है, that if you
fail to plan, you plan to fail. क्या है भाई? अरे तूने इसको इतना सीरियसली लेके तू प्लान ही करते रह जाता है। 4 महीने का प्लान, 3 महीने का प्लान, अगले साल का प्लान, क्या चल क्या रहा है भाई? The longer the plan, the difficult it is to achieve. You know why? Because you are in this stupid illusion कि आज नहीं हुआ ना यार, अरे 1 महीने का टारगेट है, कल ज्यादा कर लेंगे, कल नहीं हुआ अरे परसों कर लेंगे, and that tomorrow never comes and you know that. और जब वो करने की बात आती है, when you are on the last day of the month, you like damn, इतना सब पहाड़ जैसा सिलेबस कब खड़ा हो गया? एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर एबल टू रिलेट दिस, बिकॉज जिन्होंने सिर्फ एक ही ग्रुप दिया था और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पास हो जाएंगे और उन्होंने ऑडिट और एसएम शुरू नहीं किया, दे आर फीलिंग दैट राइट नाउ, बिकॉज उनको तो अरे हो जाएगा ना, अरे हो जाएगा ना, अरे कैसे होगा यार, कैसे होगा, तू खुद नहीं करना चाहता। नॉनसेंस। So please, if you really want to execute your plan and not just talk, but rather walk the talk, then in that case, please do micro goal setting. Micro goal setting. What do you mean by micro goal setting? 1 हफ्ते का टारगेट बनाओ, 4 दिन का टारगेट बनाओ, 3 दिन का बनाओ, 2 दिन का बनाओ, 1 दिन का बनाओ। क्यों पता है? क्योंकि जब मैं, आप समझो, मैं 1 घंटे का भी प्लान बनाता हूं ना, या 6 घंटे का भी प्लान बनाता हूं कि ये 6 घंटे में मैं ये करूंगा, द रिजल्ट इज देयर इन देयर। वही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बिकॉज आइदर आई डू इट और आइदर दैट प्लानिंग इज स्टिल इन द प्लानिंग स्टेज, where I have to do it but I have not done it, where I have to do it and I have not done it. That is the issue, god damn it. तो रियलिटी चेक है ना, वो फटाक से मिल जाता है आपको when the plans are shorter in nature. Are you getting it, my dear friends? Yes. Ninth, अगर आप जेन्यूनली अपना स्क्रीन टाइम चेक करोगे ना दोस्तों, जेन्युइनली अगर आप अपना स्क्रीन टाइम चेक करोगे, बिकॉज हुआ क्या है कि आपके लाइफ में भी एंटरटेनमेंट बचा नहीं है, या दोस्त चले गए हैं और बचा है आपका फोन, जिससे आप पागल की तरह एडिक्टेड हो। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू रिड्यूस 50% ऑफ योर स्क्रीन टाइम, वॉट एवर इट इज, the confidence that you will get that now you don't need that constant dopamine of reels. एक काचा बादाम देख के कितना टाइम गुजारोगे भाई? है हो जाएगा बेटा, वरना तेरा मुए मुए, समझा? अगर इस बार भी बेटा देखा काचा बादाम तो नॉनसेंस। रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम बाय 50%। देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज। वन सेक ऐप करके मेरा फेवरेट ऐप है, जहां पे बेस्ट पार्ट इज कि आप अगर क्या है वो सेटिंग लगा दो तो इंस्टाग्राम आप जब खोलने जाओगे ना तो वो आपको क्या है एक विंडो देगा 10 सेकेंड का, जहां पे उल्टी गिनती शुरू होगी और फिर आपको पूछेगा दैट डू यू रियली वांट टू यूज दिस ऐप, एंड दैट इज बेस्ट बिकॉज फ्रॉम माइंडलेसनेस you are being mindful, and that is what will make the difference. Because when there's the, when that self talk comes कि यार maybe I'm 18 or 19 or 20 or 21 or 22 and I'm just wasting my time in reels and not giving my 100% to my goal, this time let's make this as a difference, let's make this as a consistency, and let's hit the goal by doing what is required to be done. By doing what is required to be done. ये जब आप करोगे दोस्तों, you will start feeling proud of yourself because now you are able to control your senses. and अगर आपने ये डोपामिन वाला सीन कर लिया ना तो फिर आप बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट कर सकते। This will directly affect your health in a very positive way.
बिकॉज फिर शायद आप क्या है, जिस हिसाब से खाना भी खा रहे हो वो भी कम कर दो। क्यों? क्योंकि अब आपको थोड़ी भी भूख लगती है ना, तो आप बाहर का खाना नहीं खा रहे हो, जंक नहीं खा रहे, एंड दैट इज हेल्पिंग यू बिकम हेल्दियर, एंड हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी helps a healthy mind. Remember that always. And how you do anything is how you do everything. ये इफेक्ट्स होते हैं आपके बॉडी। एंड 10th पॉइंट है दोस्तों, लास्ट वाला, नो फिक्स्ड वेकअप टाइम, सॉरी, स्लीप एंड वेकअप टाइम। रूटीन ही नहीं है आपका कोई, क्लियरली देर इज अ लैक ऑफ रूटीन। दोस्तों अगर याद रखना, द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर माइंड इज दैट ये ऑटो पायलट मोड पे चलता है। यस, क्या आपको सुबह आके सोचना पड़ता है जैसे आप उठते हो कि हाय अब क्या करूंगी, अभी क्या करूं, मैं तो कंफ्यूज हो गया भाई, अब वो गजीनी की तरह बिहेव करते हो? नहीं, you directly hit to the washroom, you go and brush your teeth, या फिर आप क्या है, फ्रेशन अप होने जाते हो, आप यू गो फॉर अ बाथ, या फिर अगर आप योगा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो वो रूटीन सेट है आपका, वो करना ही है। यू नेवर क्वेश्चन कि हाय हाय आज ब्रश करवाना है भाई, यू नेवर क्वेश्चन दैट, यू जस्ट डू दैट, यू जस्ट डू दैट। वाई? बिकॉज इट्स अ मसल मेमोरी ना, ये करना ही है, हाथ ऑटोमेटिकली ऊपर ही आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। ये केस, तो जब आप अपना रूटीन फिक्स करते, स्पेशली योर वेकअप टाइम, योर स्लीप टाइम, स्पेशली योर स्लीप टाइम, इफ दिस इज फिक्स्ड एंड यू टेक आराम से 7 से 8 घंटे की अगर नींद लेते हो ना, आपको पूरे दिन में नींद नहीं आएगी, आपको दिन में यू विल नॉट इवन यॉन, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ट्रस्ट मी ऑन दैट, यू विल नॉट इवन यॉन, बट इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसा लोग बोलते हैं, एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू मास्टर इट। मैंने मेरा टाइम फिक्स किया है 10:30 बजे का, पर हो जाता है कई बार 11, 11:30, 12, पर मुझे वो लेके आना है 10:30 को। मेरा इंटेंट है कि ऑफिस से निकल ही जाना है बस 8 बजे, 8:30 बजे खाना खाओ, वॉकिंग जाओ, एंड देन एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स ऑफ गैप होना ही चाहिए बिटवीन डिनर एंड दिस। और ये आपको लग रही है कि सर ये क्या हेल्थ टिप्स सर है, ये सब कनेक्टेड है भाई। अगर स्लीप, इफ यू कैन कॉन्कर स्लीप, डन। क्यों आपको लगता है कि आप थके थके से लगते हो? जब आप पढ़ाई कर रहे हो आपको नींद आ रही है, क्यों? क्योंकि यू हैव नॉट टेकन इनफ रेस्ट। और भाई रात में ही सब काम क्यों करने हैं भाई? काम करने के लिए दिन है ना, यू हैव द डे, सो मेक द full utilization of that day. You know what you're doing when you're supposed to study, you are sleeping, and when you're supposed to sleep, you are reading. Why? Don't do this. Avoid. Fix your sleep. Take 8 hours of sleep every single day. Bindas, I'm telling you that. जो 22 घंटे में प्रोडक्टिविटी आएगा ना, लाइफ में नहीं आएगा। ऐसा चैलेंज है मेरा। That's it. That's all I wanted to tell you guys, my dear friends. I was able to do this to a great extent and become a better version of myself. And I really want that you also avoid these mistakes and implement these suggestions so that you are a better version of yourself. And since you have changed your methodology, your approach, your perspective, your results also will change. तो कहते हैं ना, पता नहीं आइंस्टाइन या न्यूटन ने बोला that it's a stupid person who keeps doing the same thing and expects different results. And you were that stupid person. But hopefully after this video, not, because hopefully after this video you will ponder what pattern you had set
automatically, autopilot पे चल रहा था without your even thought inside it. You were repeating in your previous attempts, and now you have chosen to break it. And here you are. Comes a breakthrough where you become a CA when you're supposed to become one. Understand? Trust me, my dear friends. You will become a chartered accountant and clear your inter C and final C exams only when you have done everything on earth to make things right. That's it. That's it. Thank you and God bless. And if you genuinely like this video, just comment at I will do it. Comment I will do it. Comment I am a CA finalist in May 2024, or I am a chartered accountant in May 2024 if you are in your final CA. That's it. And like it, because I want to keep sharing all those bittersweet experiences that I have had in my life, which I had to go through, and which you shouldn't. Because I am a teacher, so that I can tell you those experiences and you can stop making those mistakes. That's what being wise is. ठीक है? चलिए, adios amigos, hasta la vista my dear friends. And if you in any case feel that you want my mentorship, you want that guidance in GST the way you want it to be, and you want to score a proper 50 on 50 and thereby an exemption in taxation, you can go to taxkateacher.com. and purchase our fast track batch, where for our community I am going to give time, so that this time you feel proud about yourself, because I want to see that happen. Thank you.